वेल हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं और आप लोगों का क्लास 11th का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे बातें ऑलरेडी की हैं एंड आई नो कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। मुझे ये भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, बट ये जो हमें टाइम मिला है इसे हम ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the class 12 syllabus and ये हम start करेंगे with the very first unit of your biology subject। और ये जो आपका यूनिट है that is reproduction, और इसका पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे that is reproduction and organism। ठीक है, तो let us start। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे about लाइफ स्पैन। ओके, सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन होता क्या है? अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि किसी भी इंसान की औसत आयु क्या होती है, आई होप मोस्ट ऑफ लोग जो मुझे जवाब देंगे दैट विल बी 60 ईयर्स, राइट? सो 60 ईयर्स इज नथिंग बट द लाइफ स्पैन। तो ये क्या है? इट इज द ड्यूरेशन सिंस द बर्थ ऑफ दैट पर्सन टू हिज नेचुरल डेथ, राइट? नाउ एक चीज और आप लोग बोलेंगे कि कुछ लोग 60 साल जीते हैं, किसी की लाइफ स्पैन 80 ईयर्स होती है, किसी की 100 ईयर्स होती है। तो हर एक इंसान या हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जरूरी नहीं कि लाइफ स्पैन बिल्कुल फिक्स 60 ईयर्स ही हो या 65 ईयर्स हो, वो फिक्स नंबर नहीं होता। ऑब्वियसली एक स्पीसीज के डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, बट यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन, है ना? औसत है ये। सो ऑब्वियसली इट्स एन एवरेज नंबर। तो ये एक पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का एवरेज नंबर है कि एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, एंड दैट वी से अराउंड 60 to 65 ईयर्स। दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का देखेंगे तो वो अलग अलग होता है, राइट? नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन प्लैनेट पे सबका एक अपना लाइफ स्पैन होता है, एक अपना फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है बिटवीन his or her birth and natural death। See, the key point here is natural। ठीक है, अगर किसी की डेथ किसी एक्सीडेंट या किसी डिजीज या किसी और चीज से होती है, in that case the duration since his birth and unnatural death, unnatural, right, that is because of disease or any other factor, accident, anything, तो उसको हम उसका लाइफ स्पैन नहीं कहते हैं, right? Life span is duration between birth and natural death। Please make a note of it, right? Now see, जैसे हमने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स का एवरेज लाइफ स्पैन इज अराउंड 60 to 65 ईयर्स। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ नोट डाउन किया आपके लिए, जैसे लाइफ स्पैन ऑफ अ मे फ्लाई, राइट? मे फ्लाई इज अराउंड 1 day। Okay, let me tell you, this is a particular type of mayfly जिसकी की जो लाइफ स्पैन होती है सिर्फ एक दिन की होती है, 1 day, right? Not only this, if you see people tree, right? See, इसकी लाइफ स्पैन is around 2500 years। Can you see? एक mayfly और एक people tree दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और दोनों के लाइफ स्पैन में ह्यूज डिफरेंस है, करेक्ट? तो नॉट ओनली दिस, आपके एनसीईआरटी बुक में एक ये चार्ट दिया हुआ है जिस चार्ट को आपको फिल करना है और कुछ ऑलरेडी फिल्ड हैं। सो प्लीज लेट्स टेक लुक ऑन दिस, और हमने आपके लिए ऑलरेडी इसको फिल करके रखा है। एलिफेंट, इसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? सो एक एलिफेंट का एवरेज लाइफ स्पैन इज 48 ईयर्स इफ इट इज एन इंडियन एलिफेंट, और इट मे बी 60 to 70 ईयर्स फॉर अफ्रीकन एलिफेंट। आई होप यू नो एलिफेंट्स के दो स्पीसीज हैं मेनली, एक है इंडियन एलिफेंट या एशियन एलिफेंट्स एंड सेकंड वन इज अफ्रीकन एलिफेंट। दोनों थोड़े अलग होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लार्जर और इनका लाइफ स्पैन भी बड़ा है, 60 to 70 ईयर्स का है, जबकि इंडियन का 48 ईयर्स है। ऑन कॉन्ट्ररी, इफ यू सी अ रोज प्लांट, the average lifespan is 35 years। Similarly, dog, it is 10 to 13 years। Butterfly का NCERT ने दे रखा है around 1 to 2 weeks। Crow 15 years। Now see,
Banyan tree 25 years, cow 18 to 22, parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, mayfly 40 days में है ये, rice plant 3 to 7 months, banyan tree is around 300 years, tortoise 100 to 150 years. uh, प्लीज आई वुड एडवाइज कि इस टेबल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट. ओके, नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन इमर्जेस आउट ऑफ दिस डेटा, है ना, इस पूरे डायग्राम को देखने के बाद हमें क्या डेटा मिल रहा है. सी, a crow and a parrot, right, both are birds and both are of almost same size, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में देखो बहुत डिफरेंस है. पैरट हैज अ व्होपिंग लाइफ स्पैन ऑफ 140 इयर्स, जबकि क्रो का सिर्फ 15 साल है. ओके, सिमिलरली देखो banyan tree around 300 years, but see the people tree 2500 years, राइट. दोनों पेड़ हैं, दोनों एक बराबर हैं, एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलते हैं, फिर भी जो पीपल का पेड़ है उसका एवरेज लाइफ स्पैन 2500 ईयर्स है, जबकि बैंगन ट्री का अराउंड ओनली 300 ईयर्स है. करेक्ट. नाउ सी, हॉर्स एंड अ टॉर्टोइस, दोनों एनिमल्स हैं. टॉर्टोइस 150 साल तक जिंदा रह रहे हैं, जबकि हॉर्स ओनली 25 to 30 ईयर्स. See the elephant, which is largest in size among all of this, only 48 to 70 years, right? जबकि tortoise 150 years. तो कैन यू सी कि ये जो लाइफ स्पैन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है ना, साइज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, as you can infer from mayfly or the life of butterfly, कि कीड़े हैं तो छोटा होगा लाइफ स्पैन, अगर प्लांट्स है तो बहुत बड़ा होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है. सी, रोज प्लांट ओनली 35 years. नॉट ओनली दैट, टू गिव अनदर पर्सपेक्टिव, आप लोग पुदीना खाते हैं, मिंट, मिंट का पौधा ओनली फ्यू वीक्स के लिए जिंदा रहता है, फिर मर जाता है ये, है ना. तो द होल पॉइंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेनली ऑन द जेनेटिक फैक्टर, है ना. ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है ऑन देयर साइज. एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, स्टिल इट्स लाइफ स्पैन कैन बी वेरी हाई. एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, फिर भी उसका हो सकता है कि लाइफ स्पैन छोटा हो. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि जो लाइफ स्पैन होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज. एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम दिस होल एक्सरसाइज इज हर एक ऑर्गेनिज्म who have taken birth has to die one day, है ना. तो जो भी जन्मा है उसे मरना है. सो एवरी स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट इज मॉर्टल, नोबडी इज इमॉर्टल. सबको मरना है, whether these are plants, animals, okay, insects, everybody has to die. Okay, but you know biology is the science of exceptions. तो यहाँ पे भी एक exception है, and that exception is nothing but single-celled organisms like bacteria, है ना. तो इस planet पे सब कुछ mortal है, सब कुछ mortal है, जो भी है उसको मरना है except bacteria. Now, what happens to bacteria and why we are giving such statement कि bacteria जो है इसका exception है, इसका मतलब वो mortal नहीं है, immortal है, अमर है वो, है ना, वो अमर है. ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, आई होप वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 11 फर्स्ट यूनिट, जब हम लोगों ने बात करना चालू किया था अबाउट किंगडम मोनेरा, तो उसमें हमने बात की थी बाइनरी फिजन और इन सबों की. उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, या मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन. तो उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, राइट, सी हियर. तो सपोज करो कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल है. ये क्या करता है कि फाइनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन या इसके रिप्रोडक्शन ये टूट जाता है दो छोटे छोटे डॉटर सेल्स में, राइट. और इसमें एक्चुअली इसी का जो
साइटोप्लाज्म है जो जेनेटिक मटेरियल है, तो दो पार्ट में यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. सो एक्चुअली हो क्या रहा है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मर नहीं रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में चला जा रहा है जो कि अभी भी क्या है, जिंदा है. सो ये जो साइटोप्लाज्म है या ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इट नेवर डाइज, ये खत्म ही नहीं हो रहा है. ये बस क्या हो रहा है, पेरेंट से डॉटर सेल में, फिर उस डॉटर सेल बड़ी होगी, विल बिकम पैरेंट, और उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में मूव करता रहता है ना. सो सिंस साइटोप्लाज्म हियर इज नॉट डाइंग, वी कंसीडर दिस ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड एज इमॉर्टल, अमर है, ये कभी नहीं मर रहा है. मतलब तो इसमें एक बेसिक डाउट जो अपीयर हो जाता है ऐसे केस में इज वेदर इन दिस केस, जहाँ पे कि ये बैक्टीरिया डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल्स बना रहा है, इसको हम सेल डिवीजन कहें या रिप्रोडक्शन कहें, राइट. सी, दिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन, है ना, बाइनरी फ्यूजन हुआ है, सेल डिवीजन हो रहा है. At the same time, it is reproduction. क्यों? Parent is giving rise to two daughter cells. So यहाँ पे cell division is synonymous to reproduction. और cytoplasm is not dying. इसीलिए these organisms are considered as immortal. है ना? तो दुनिया में अमर कौन? Bacteria. They are the most simplest, yet they are immortal. चलिए, we move to the next aspect of it. Now see. So, except bacteria, all the living organisms on this planet have to die. They have a fixed lifespan, and after that, they have to die. Okay, but अब आप सोचो elephants के बारे में, है ना? यहाँ पे मैंने elephants example लिया है. You can take any other example, but as of now, let's stick to elephants. Think about elephants. Suppose अगर एक elephant का अफ्रीकन एलिफेंट का लाइफ स्पैन अराउंड 70 ईयर्स है, ओके. तो धरती पे जो एलिफेंट्स है 70 साल के बाद मर जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए ना, बट इट डज नॉट हैपन. वन एलिफेंट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 70 ईयर्स इट डाइज. लेकिन इस प्लैनेट पे अभी भी एलिफेंट्स हैं, दे कीप कंटिन्यूइंग देयर रेस. कैसे? तो होता क्या है, इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ पॉपुलेशन, है ना. सपोज कीजिए ये एक पॉपुलेशन मैंने लिया यहाँ पे एलिफेंट्स का. दिस आर अफ्रीकन एलिफेंट्स, क्योंकि इनके कान बहुत बड़े बड़े हैं ना, दिस इज डिस्टिंक्टिव फीचर. ओके, तो ये अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं. एट अ टाइम इन दिस पॉपुलेशन देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 एलिफेंट्स, जिसमें से किसी फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल बेबी एलिफेंट्स हैं, है ना. दे आर स्टिल यंग, न्यू बॉर्न्स हैं. जबकि सेकंड एंड थर्ड दो ऐसे एलिफेंट हैं जो कि एडल्ट हैं. ग्रेट. तो एक 5 एलिफेंट्स का पॉपुलेशन है एक जंगल में, वहां पे 3 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं. नेक्स्ट क्या होता है, इन फ्यू ईयर्स, से फॉर एग्जांपल मे बी से 20 ईयर्स डाउन द लाइन, क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो पहला है ये बड़ा हो गया, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या हो गए, बड़े हो गए. और जो एडल्ट थे उन्होंने क्या किया, दे रिप्रोड्यूस्ड. सो वो एक अपने तो खुद थे ही, दे प्रोड्यूस अनदर बेबी एलिफेंट, अपने जैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिए. नाउ आफ्टर फ्यू मोर ईयर्स क्या होगा, आफ्टर फ्यू मोर ईयर्स, अब इस पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं. कुछ सालों के बाद क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट एलिफेंट था, राइट, नाउ दिस फर्स्ट एलिफेंट हु इज नाउ एडल्ट हैज रिप्रोड्यूस्ड. द सेकंड एलिफेंट जो कि ऑलरेडी रिप्रोडक्शन कर चुका है, उसका एक छोटा बेबी है. नाउ दिस एलिफेंट हैज ग्रोन ओल्ड, और इसका जो बेबी है वो अब बड़ा होने लगा है थोड़ा. सिमिलर इज द केस विद दिस वन, जो बड़ा एलिफेंट था वो ओल्ड हो गया और उसका जो बच्चा है थोड़ा बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. और ये दो दोनों एडल्ट थे, अगेन ये क्या कर गए, रिप्रोड्यूस कर गया. नाउ एट दिस टाइम पॉइंट क्या होगा, दिस एलिफेंट, ओल्ड एलिफेंट विल डाई, करेक्ट. इट हैज कंप्लीटेड इट्स 70 इयर्स ऑफ जर्नी, लाइफ स्पैन, और ये मर जाएंगे. लेकिन इनकी जगह पे क्या आ गए, ये दो नए
एलिफेंट्स आ गए who has taken their place. अभी भी देखिए क्या हुआ, the population size has either increased or remained constant. In this case देखिए 2, 3, 4, 2, 6 and 2, 8. So overall population size over the time 5 से कितनी हो गई, 8 इंक्रीज कर गई है ना. Despite there are 2 deaths in the population. So लाइफ स्पैन ठीक है, लाइफ स्पैन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म मरता है, लेकिन बिफोर इट डाइज इट रिप्रोड्यूसेस एंड replaces itself with new organisms of their own kind. और इसीलिए कभी भी जो एक पॉपुलेशन होता है वो नहीं मरता है, सिर्फ ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, पॉपुलेशन कभी भी नहीं मरता है, राइट. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. सी, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ये फेजेस होते हैं, बर्थ, एडल्ट, देन इट गोज ओल्ड एंड डेड. बट ड्यूरिंग दिस एडल्ट व्हाट दे डू इज दे रिप्रोड्यूस, करेक्ट. और इसीलिए क्या हो रहा है, सी, रिप्रोडक्शन इज, इसीलिए क्या हो रहा है, सॉरी, इज ऑर्गेनिज्म मर रहा है लेकिन पॉपुलेशन कभी भी नहीं मर रहा है. unless and until they extinct the entire population, extinct either due to some natural phenomena or due to some anthropogenic factors. Now, many of you may ask what is anthropogenic factor. So these are the factors which are created by humans, man-made, है ना. जैसे हम लोग आज के डेट में कर रहे हैं, we are cutting down jungles, we are destroying the habitats of the various wild animals because of which they are getting extinct, है ना. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट. बहुत सारे endangered species हैं, कुछ खत्म हो गए हैं ऑलरेडी, जैसे डोडो बर्ड्स एंड एक्सेट्रा, डायनासोर्स, यू नो दैम. दो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के लिए एंथ्रोपोजेनिक रीजंस नहीं थे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन डोडो बर्ड्स के लिए ऑब्वियसली वी आर. ग्रेट. नाउ let us define then reproduction. See, why I'm emphasizing on reproduction is कि इस पूरे process में, see, the most crucial thing is reproduction. अगर organisms reproduce नहीं करते तो population भी खत्म हो जाता है ना. तो किसी भी particular organism का जो population है वो कभी भी खत्म नहीं होता है. इसका सिर्फ और सिर्फ जो reason है वो है reproduction, right? Then the question comes is, what is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young one similar to themselves, है ना. So basically हम क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी biological process है जिसमें कि जो organism है वो अपने जैसे दूसरे नए organism को produce करता है. Okay? I hope you all are aware of it. Now let's see is then how many types of reproductions are there. Okay, see, there are mainly 2 types of reproduction, asexual and sexual. I'm pretty sure that you all know this. हम लोगों ने already 11th standard में इसके बारे में बात किया है, लेकिन we will again reiterate it. हम लोग फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे. देखिए, asexual reproduction and sexual reproduction, again जैसे मैं हमेशा बायोलॉजी में बोलता हूँ, look at the term carefully. A एंड सेक्सुअल, ए का मतलब होता है नो, सो ए का मतलब है नो. सेक्सुअल यानी कि सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि किसी भी सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि मेल या फीमेल पेरेंट्स यानी कि 2 सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल. वाइल ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 अलग अलग जेंडर के यानी कि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट. लेट्स go one by one into their difference and that will be sufficient for this particular topic. Let's see. So in case of asexual reproduction, since 2 अलग अलग सेक्स की जरूरत नहीं है तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे जो 2 पेरेंट होने चाहिए उसमें से एक मेल पेरेंट होना चाहिए और दूसरी फीमेल पेरेंट होनी चाहिए, है ना. सिर्फ मेल मेल, सिर्फ फीमेल फीमेल विल नॉट वर्क, है ना. सो वी रिक्वायर 2 पेरेंट्स ऑफ 2 different genders
ठीक है। अब होता क्या है कि these two parents, male and female parent, the male parent will produce male gamete, है ना, they will produce male gamete, and similarly female will produce the female gamete. Okay, but this will happen only in the sexual reproduction. Gametes will be formed only in the sexual reproduction. In case of asexual reproduction, there is no gamete formation at all. Okay, next, in case of asexual reproduction, since there are no gametes, there will be no fertilization. But in case of sexual reproduction, these two gametes, male and female gametes, will fuse. The process of fusion is called fertilization to form zygote. Okay, and then this zygote will develop into a young one or another offspring. Okay, now the more fundamental and basic difference between asexual and sexual reproduction is, in case of asexual reproduction, there is no genetic variation created. Okay, so all the offsprings and their parent will be morphologically and genetically similar, and all such organisms which are morphologically and genetically similar are known as clones. Please remember, they are called clones. So they are very much identical to each other morphologically and genetically. Whereas in case of sexual reproduction, the offsprings that are produced will neither be identical to their siblings, yani ki other offsprings of the same parent, nor they will be identical to their own parents. Okay, so all these offsprings will be having some variation, both morphological and genetic variation. So in case of sexual reproduction, all the organisms have some or other variation. They are genetically different. So sexual reproduction is a source of genetic variation. And this is the most important point. Please do remember that it is genetic variation which equip the organisms with possibility of evolution so that they can sustain in different environment. Okay, so it is very much important. We will be talking about this in greater detail when we will be talking or when we will be learning genetics and evolution. Okay, so please, as of now, remember that in sexual reproduction there is genetic variation produced, but in asexual reproduction genetic variations are not produced. Now let's move to the example. Asexual reproduction mainly occurs in unicellular organisms. Okay, some plants, mainly the lower plants like algae, bryophyta, pteridophyta, some fungi like imperfect fungi, as you have studied. In imperfect fungi there is no sexual reproduction. I hope you recall it. And in some animals, mainly the primitive animals like porifera, coelenterata. Okay, not in the higher. In higher the sexual reproduction occurs in higher plants, in higher animals, fungi, and some protista as well. Okay, so as organism becomes more and more advanced, they switch to sexual reproduction, while most of the primitive and simple organisms opt for asexual reproduction. Obviously there is a bargain which we will be talking later. The asexual reproduction is fast and simpler, less energy consuming. However, the sexual reproduction is cumbersome process. It is more complex and more energy consuming. But the advantage is sexual reproduction is going to produce genetic variation, which is very crucial for evolution and hence the continuation of the species. Okay, we will be elaborating on these things later on as well. Great. So let's move ahead and understand what are different types of asexual reproduction. Okay, again, let me tell you that most of this you have already studied in your class 11th, unit 1, when we were doing
kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Okay, so there you already have studied them, but we are again going to brush up, and I am not going to teach you in detail here as we have already studied it. I'm just going to give you a brief of all of these. So asexual reproduction, there are many ways by which asexual reproduction occurs in organisms. The very first one that we are going to discuss is fission. Now fission is nothing, the word means to break. Fission means to break. So what happens here is actually the cell or the organism breaks into two pieces, and the two pieces becomes two daughter cells, and they finally become two different organisms, and this is how they reproduce. Okay, now this fission process of fission can be divided into two parts. One is binary fission and second one is multiple fission. Now binary fission is the process in which a parent cell divides to form two daughter cells, two new organisms, while in multiple fission, so I'm making it for you here. So one cell is going to divide and form two daughter cells. But in case of multiple fission, a single cell is going to divide in multiple times, and this will give numerous daughter cells or daughter organism, right? So this is multiple fission. The best example is amoeba. Now in favorable condition, the amoeba divides by binary fission or reproduce by binary fission, but in case of adverse conditions or unfavorable conditions, they undergo the process of sporulation, that is they form a cyst around their body, and when the favorable condition returns, inside the spore the protoplasm undergoes multiple fission, producing a lot of spores which are known as pseudopodiospores. Then the wall breaks and all these spores are released into the environment. Okay, and everyone will go into a new amoeba. Correct? So this is multiple fission. Not only this, multiple fission is also found in protozoa like Plasmodium, which is the pathogen of malaria. Great. So this is fission. I hope you must have recalled it by now. Let's move to the other one, that is budding. Now budding, bud are small outgrowths on the parent body, like we have seen in case of Hydra. And there will be a small outgrowth. This is called a bud. Later this bud detaches from its parent body. Correct? It fixes itself on a rock and finally it becomes a new organism. This is budding. So budding is not only found in Hydra but also found in yeast, where it occurs because of unequal cellular division. One cell which is larger and the other cell which is smaller. Now this is called bud, which grows in size, later detaches from the parent body and become a new yeast. And this is particularly the baker's yeast, जो कि हम लोग बोलते हैं Saccharomyces cerevisiae. Great. The other one is gemule. Now you all have studied gemule. We find it mainly in the bryophyta. ठीक है, bryophyta में we find gemule formation. We have gemma cups, if you remember. Gemma cups, which were these heart-shaped cups. ऐसा आपका bryophyta था, if you remember. This was the midrib, और midrib के ऊपर ऐसे cups बनते थे, gemma cups, और उसके अंदर छोटे-छोटे gemules होते थे. Remember now? और इसके नीचे से ऐसे rhizoids निकले होते थे, and there could be a N3DO4 or RK1E4. Well, if you still not remember or recall, please go and revise your class 11 notes. Great. The next process is fragmentation, and this is a pretty simple process which occurs mainly in the filamentous organisms, जिसमें कि filament many parts में टूट जाता है, and every part will grow into a new organism. Mainly कहाँ मिलता है? Mainly ये मिलता है filamentous alga like Spirogyra.
Correct? Now, next one is sporulation. Again, you must remember, or you can recall it from class 11 lectures. Zoospores, aplanospores, conidiospore, ascospore, basidiospore. Now what are these? If you are unable to recall, let's see one by one. Okay, sporulation is the process by which an organism makes spores. Now spores are in three layers, are covered by three protective layers, and they are resistant to chemical and physical changes. These spores are of different types, on the basis of their morphology, origin. First one is zoospore, which we have seen in case of Chlamydomonas or blue-green algae. Aplanospore, same in blue-green algae. Conidiospore, ascospore, and basidiospore in fungi. Right? So spores. Now these are also asexual mode of reproduction. Finally, vegetative propagation. Now, vegetative propagation is a asexual method, mostly found in plants. Just make a different vegetative parts of the plants are used for reproduction. Like it could be root, stem, or leaf. Now you can recall we have studied a lot about this in the chapter morphology of flowering plants. We have studied about modification of root, stem, leaf. Okay. So a root such as sweet potato can be used for asexual reproduction, right? The radical buds grows into new organism. So this is what? Vegetative propagation by root. Similarly, you have studied about stems and different modification of stems like tuber, rhizome, runner, offset, stolon, bulb, etc. Right? So this all comes in this asexual reproduction. Similarly, leaf like bryophyllum. Okay, so this is about asexual reproduction. This chapter is very basic, as most of it you have already studied in class 11th. What is that we have to emphasize here, or what will be new in this chapter, is the sexual reproduction that we will be covering in the next lecture, and that will be mainly focused on sexual reproduction and how there are different types of sexual reproduction in different organisms. Primarily, we will be talking about menstrual cycle and estrous cycle, and then what happens after reproduction, what are like post-fertilization changes and things like that. Well, so that all these things we will see in the next lecture. For now, thank you and stay safe.